Hello students, how are you all? I hope you are fit and fine at your home. Dear students, today we are going to study one of the important chapters of 10th standard Maharashtra Board, geography subject. And in geography, we are going to understand one of the very important chapters, that is 7th lesson human settlement. Okay students, तो आज हम यहाँ पे बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट। हम इसे हिंदी में कहेंगे ये मानवीय अधिवास। स्टूडेंट, you can see on the screen the two pictures are given here. Okay, the two images are given here. The two images of two separate settlements are given here. Okay student, लेकिन अगर इस चित्र को, इस इमेज को समझना है और इसके नीचे जो सवाल पूछे गए हैं, इफ यू वांट टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो दिस पिक्चर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय सेटलमेंट। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि क्या। ओके, मानवीय अधिवास यानी कि क्या। ओके स्टूडेंट्स, अधिवास यानी कि क्या। सी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मीन बाय सेटलमेंट, पहले हम अधिवास क्या है ये समझने के पहले हम क्या जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। सी स्टूडेंट, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड हियर। फॉर एग्जांपल, स्टडी द टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया गिवन इन फिगर। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट। नाउ सी, answer the following questions. First question is very important. See, identify the types of settlement. So we have to identify the types of settlement. हमें यहाँ पे अधिवास के प्रकार कौन से है वो आइडेंटिफाई करने, किस तरीके के अधिवास यहाँ पे दिए गए हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सेकंड वन, विच वन इज अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट एंड व्हाई। और इसमें से ये जो दोनों इमेजेस हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं उसमें से कौन सा न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है वो हमें पहचानना है। ओके, न्यूक्लिएटेड यानी कि केंद्रीय अधिवास। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, which one is a dispersed settlement, what could be the reason behind it। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो यानी कि डिस्पर्स्ड सेटलमेंट यानी कि क्या, उसका आंसर हमें यहाँ पे जानना है। और फोर्थ वन, कैन यू गेस इन विच रीजन्स आर दीज सेटलमेंट्स लोकेटेड इन इंडिया। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो यहाँ पे सेटलमेंट्स के अलग अलग प्रकार दिखाए गए हैं वो इंडिया में कहाँ स्थित है वो हमें पहचानना है। स्टूडेंट्स, अगर हमें इमेजेस समझना है और समझ के इस सवालों के जवाब अगर देना है तो कुछ बातें हमें पहले समझना पड़ेगा, वो यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन सेटलमेंट। अगर एक बार आपको ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि क्या इसका अर्थ पता चलता है तो आपको सवालों के जवाब ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन सेटलमेंट। स्टूडेंट, तो जैसे कि मैंने कहा अभी कि ह्यूमन सेटलमेंट्स मींस अधिवास, मानवीय अधिवास। मानवीय अधिवास यानी कि क्या, कि जहां पे लोग बसते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे हम रहते हैं परमानेंटली, हम यहाँ पे रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारा अधिवास कहते हैं, हमारा डोमिसियल कहते हैं। ओके, वेरेवर वी लिव फॉर अ लॉन्गर टाइम परमानेंटली हैविंग सम पर्पस इन ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज अधिवास, मानवीय अधिवास। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। ओके, बहुत दिनों तक, बहुत सालों के लिए परमानेंटली अगर हम एक जगह पे रहते हैं तो उस जगह को हम अधिवास कहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सी, ह्यूमन सेटलमेंट मींस क्लस्टर ऑफ dwellings of any type or size where human beings live. For this purpose, people may erect houses and other structures and command some area or territory as their economic support base. ओके स्टूडेंट, नाउ यहाँ पे क्या कहा गया, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर हम बहुत सालों तक एक जगह पे रहते हैं किसी कारणवश तो उसे हम अधिवास कहते हैं। और फिर वहां पे रहने के लिए वी इरेक्ट हाउसेस। व्हाट डू वी इरेक्ट, वी इरेक्ट हाउसेस। हम घर वहां पे क्या करते हैं, इरेक्ट करते हैं, खड़े करते हैं। ठीक है, और वेल एज सिर्फ घर खड़े करते हैं क्या, तो नहीं, तो उसके साथ साथ अलग अलग संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस भी हम यहाँ पे खड़े करते हैं, बांधते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट कहेंगे। एज वेल एज, और वहां पे हम कुछ टेरिटरी जो होती है, जो जगह होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको
कमांड करते हैं, उसको कंट्रोल हम करते हैं, ठीक है, तो उसे हम आदिवास कहते हैं। ठीक? तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि जहां पे लोग बहुत सालों तक परमानेंटली रहते हैं और उसके लिए घर बनाते हैं और उसके साथ साथ अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स, इमारतें बनाते हैं, उसे हम आदिवास कहते हैं। ठीक है, और एक डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, settlements are towns where buildings are close together, often clustered around a central point. A central point. The location of the nucleated settlement can be determined by a range of factors, including being easy to defend, close to the water supply, okay, or located at a root center. Now see student, यहाँ पे settlement की अलग definition, यहाँ पे थोड़ी सी अलग definition यहाँ पे दी गई है कि सेटलमेंट्स क्या है, आदिवास क्या है, अलग अलग शहर है, ओके, शहरों की बस्ती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे घर जो होते हैं क्लोजली क्लस्टर्ड होते हैं, आसपास ये घर बनाए जाते हैं। और ठीक है, एक ऐसा लोकेशन होता है जिसके आसपास बहुत सारे घर बनते हैं, ठीक है, संस्थाएं बनती है, उसे हम न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहते हैं। तो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट इज वाटर सप्लाई। अगर वाटर सप्लाई है, पानी का सप्लाई है, तो वहां पे बहुत सारे घर वहां पे बन सकते हैं और उसे हम न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, सी अगेन यहाँ पे वही जो मैंने आपको बताया था, explanation of the settlement is given here. See, the earliest humans moved from place to place to find food. Eventually, some people stopped roaming and began to settle in one place. They built homes and grew their own crops on the land around them. Sometimes they had to adapt to certain aspects of the environment around them. But small settlements soon grew into villages, towns, and cities. Humans found that a variety of places are ideal for settlement. Now, student, अगर आपको पता है, अगर आपने पढ़ा है, हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है, तो आपको समझ में आएगा. In 5th standard, you might have studied that village settlement. Okay, where do we see the village settlement? Nearby the river. Most of the time, on the banks of river, we see the human settlements or the village settlements. Okay, तो पहले पहले जो लोग जो थे वो यहाँ वहां घूमते थे, जैसे कि हमें पता है 5th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन, होमो सेपियन हमने पढ़ा है. ठीक है, तो अगर आपको पता है होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, ये सब केव्स में रहते थे और उसके बाद जो मानव है यहाँ वहां भटकते थे, घूमते थे, उनका रहने का कुछ ठिकाना नहीं था. लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि नदी किनारे ओके उपजाऊ जमीन होती है, वहां पे क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, फिर सब जो लोग हैं और जो आदिवासी लोग हैं और मानव है वो नदी किनारे रहने लगे. कहां पे? नदी किनारे रहने लगे, क्योंकि नदी के पास में जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो बहुत ही उपजाऊ होती है. और बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्टेड लिविंग नियर बाय द बैंक ऑफ रिवर एंड दे स्टार्टेड ग्रोइंग द क्रॉप. ओके, इस तरीके से जो मानव भटकता था, अब वो ग्रुप में एक साथ नदी किनारे रहने लगा. ठीक है, और फिर जैसे ही वो ग्रुप में रहने लगा, धीरे धीरे उसकी आबादी बढ़ती गई और फिर ये छोटे छोटे ग्रुप्स, ट्राइब्स जो है विलेजेस में कन्वर्ट हुए, विलेज टाउन्स में कन्वर्ट हुए, टाउन सिटीज में कन्वर्ट हुए. ओके, सो इस तरीके से आबादी बढ़ने लगी, यानी कि आदिवास बढ़ने लगा, ह्यूमन बीइंग का आदिवास बनने लगा. जैसे कि मैंने अभी बताया, ह्यूमन सेटलमेंट होने का कारण क्या है, आदिवास का कारण क्या है, कहां पे लोग बसते हैं और पहले बसते थे. तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रीजन उसके पीछे है वो, यानी कि पानी का सप्लाई. द सप्लाई ऑफ वाटर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस बिहाइंड द ह्यूमन सेटलमेंट. सो वेरेवर वी सी द रिवर, देयर बाय द साइड ऑफ द रिवर, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, we see the earliest human settlements. So here one of the reason behind the human settlement is river, and river is one of the source of fresh water. What we can say? Fresh water, that is a potable water, that is drinkable water. So people used to live nearby the river. Right now also we can see most of the cities are settled down on the bank of rivers. Okay, so it is very useful for drinking water as well as irrigation. Just now I have told you most of the crops can be grown by the side of river. And why?
because water supply is there. So thousands years ago, because of availability of fresh water and the water for irrigation, most of the human settlements we found nearby the rivers. Okay, now the next reason behind the human settlement is harbors. Okay, harbors, most of the time, where do we see the harbors? Okay, most of the harbors are on the coastal area only. Okay, coastal area means what? The land which is nearby the sea. Okay, so harbors, we say harbors, port, so dockyards, port yards. Okay, and harbors. And one of the important use of harbors is that here the ships can be anchored and the ships can be used for the purpose of transportation. For the purpose of trading, harbors are very useful, and because of that, most of the human settlements we see nearby the river and the harbors, because here people can do the trading, communication, transportation with the help of harbors. Okay, student, have you understood this much? Now next, one of the important reason behind the human settlement is volcano also. Okay, wherever we have the volcanic eruption, what is the reason behind that, student? See now, वोल्केनिक इरप्शन जो होता है उससे जो उसके आसपास की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। और आपको पता है अगर अगर जमीन उपजाऊ है, फर्टाइल है, तो डेफिनेटली वहां पे खेती हो सकती है। अगर खेती होगी तो वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट होगा, अधिवास होगा। वोल्केनिक इरप्शन जहां पे होता है वहां पे भी सॉइल बहुत फर्टाइल होती है और उसके वजह से वहां पे भी हमें सेटलमेंट दिखाई देता है। अब इन शॉर्ट आई हैव टोल्ड यू कि कहां कहां हमें ह्यूमन सेटलमेंट दिखाई देती है, नियर बाय द रिवर, हार्बर्स, देन वोल्केनिक इरप्शन जहां पे होता है उस जगह पे। और बहुत सारे ऐसे रीजंस है जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट होता है, जैसे कि अगर ट्रेडिंग सेंटर है तो वहां पे भी ह्यूमन सेटलमेंट हमें दिखाई देता है। तो मैंने बताया कि आदिवास कहां कहां पे हो सकता है और हुआ है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ह्यूमन सबसे पुराना ह्यूमन सेटलमेंट, सबसे पुराना मानवीय अधिवास कहां पे हुआ था। हमें पता है कि सबसे फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट, ओके, the humans built first permanent settlements where by the side of river, okay, that is Indus river, and the settlement of the civilization is called as the Mohenjo-daro settlement or civilization. Okay, this is the one of the earliest settlements we can say, student, and we are quite aware about the Mohenjo-daro settlement or civilization. Okay, Harappa Mohenjo-daro civilization, which is located, situated by the side, by the bank of Indus river, सिंधु रिवर के बैंक पे, सिंधु नदी के बैंक पे ये हमें संस्कृति दिखाई देती है, वो यानी कि मोहेंजो-दारो। ओके, और हड़प्पा मोहेंजो-दारो संस्कृति यहाँ पे दिखाई देती है, आदिवास हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है। और अभी के लिए जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन है, पाकिस्तान सिचुएटेड है। ठीक है, देन वन ऑफ द अगेन अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इज मेसोपोटामिया। ओके, इन टिग्रिस एंड यूफ्रेटस रिवर। ओके, ऑन द बैंक ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेटस river we can see one of the earliest civilization, that is Mesopotamia. Okay, so first I have told you which one, the first I have told you that is Mohenjo-daro civilization. Second one is Mesopotamia civilization on the banks of Tigris and the Euphrates. And one of the ancient civilization we can see, that is the Egypt. Okay, Egyptian civilization, which is situated, located on the bank of Nile. Okay, student. So here Indus river, Tigris and Euphrates, as well as what, Nile river. Okay, on the banks of all these rivers we see the earliest human settlements. Okay, student, have you understood? Now हमने तो अभी जाना है कि किस तरीके का सेटलमेंट कहां कहां पे हो चुका है, हुआ है। सबसे पुराना एशियंट प्राचीन आदिवास कौन सा है वो भी हमने देख लिया। लेकिन अब ये आदिवास के अलग अलग प्रकार है, टाइप्स है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट्स, व्हिच आर दे। If once we understand this, then we will able to answer the earlier questions which are asked below the images. Now see, there are three main settlements. Okay, one is nucleated, second one is linear, third one is dispersed. Okay, now here we are going to understand the meaning of nucleated settlement, linear settlement and dispersed
settlement. Don't forget, student, very easy. See, nucleated, what is nucleated settlement, student? For example, see, nucleated settlements comprise of buildings that are situated close together, usually clustering around a central area such as river crossing or रोड जंक्शन. वेरी सिंपल स्टूडेंट. न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट यानी कि केंद्रीय आदिवास. केंद्रीय आदिवास यानी कि ये जो आदिवास होता है किसी एक सेंटर के आसपास बहुत सारे घर बनते हैं, संस्थाएं बनती है, ओके, लोग रहने लगते हैं, ठीक है. फिर ये जगह जो होती है, ये सेंट्रल प्लेस जो होता है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रिवर हो सकता है, जैसे कि चौराहा हो सकता है, जैसे कि बहुत बड़ा रास्ता हो सकता है, जैसे कि कोई बस स्टॉप हो सकता है और बस स्टैंड हो सकता है, या फिर कोई रेलवे स्टेशन हो सकता है, या फिर कुछ एयरपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मार्केट हो सकता है. तो ये कोई भी एक रीजन ऐसा हो सकता है, प्लेस ऐसा हो सकता है कि उसके आजू बाजू में बहुत ज्यादा आदिवास, ह्यूमन आदिवास हमें दिखाई देता है, जहां पे बहुत ज्यादा लोग कॉन्सेंट्रेट होते हैं, रहते हैं, ठीक है. तो उसे हम न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा कि न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्या है. कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम नाउ अगर मार्केट है तो मार्केट के आजू बाजू में बहुत सारे घर रहते हैं, है ना, हमें घर दिखाई देते हैं. लोग घर वहां पे क्या करते हैं, इमारतें नए नए खड़ी करते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, तो उसके आजू बाजू में बहुत ज्यादा आदिवास सेटलमेंट हमें दिखाई देता है. तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन इज, see, just now I have told you nucleated settlements are comprised of buildings that are situated close together, usually clustering around a central area such as river crossing, road junction. For example, here you can see the houses are very close to each other. The next one is that dispersed or scattered settlement. Dispersed यानी क्या, separate, okay, or scattered, separated, okay, not close to each other, नॉट क्लस्टर्ड टू ईच अदर. तो देखिए, जैसे कि हमने अभी देखा कि न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स में घर बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्पर्स्ड कहा गया है, यानी कि घर जो होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर तक व्हाट सिचुएटेड होते हैं, लोकेटेड होते हैं, ठीक है. ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लेस होती है, और घर भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं. जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो कि घर बहुत दूर दूर दिखाई देते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम इन रूरल एरियाज हमें इस तरीके का सेटलमेंट दिखाई देता है. इस तरीके का सेटलमेंट हमें डेजर्ट एरिया में दिखाई देता है, माउंटेन और हिली एरिया में इस तरीके का सेटलमेंट हमें दिखाई देता है. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको. नाउ नेक्स्ट वन ऑफ द important again settlement that we are going to understand, linear or ribbon settlement. Most of the time the houses are located or situated by the side of road continuously, okay, that kind of settlement is called as linear settlement. Student, in the field visit we have already studied what is mean by linear settlement. In 9th standard we have studied what is mean by linear settlement. By the side of road we see houses, that is called as what, linear. Here we can see a road, and by the side of road we can see such kind of settlement, such kind of houses we can see here, okay. So this is called as linear or ribbon settlements. Understood students? Very good. तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि क्या. उसके बाद हमने समझा कि सबसे पुराना अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट कहां पे और उसके रीजंस क्या है वो समझ लिया. उसके बाद हमने समझ लिया है कि सेटलमेंट्स के प्रकार कौन से हैं, टाइप्स, विच आर द टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स. सो न्यूक्लिएटेड, डिस्पर्स्ड एंड लीनियर हमने समझ लिया. सो वी हैव अंडरस्टूड नाउ द टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट. नाउ इट विल बी वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चंस दैट we have seen earlier in the beginning of the chapter. Now here we can see the pictures, student. Two pictures are given, two images are given, and we have to identify the pictures, the settlements, and we have to give the answers. Now see, in this picture the human settlement is concentrated, okay. Here we see the concentration of the human settlements together. It means that students, इस पिक्चर में हमें क्लियरली दिखाई देता है कि जो मानवीय आदिवास है बहुत नजदीक नजदीक यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो चुका है ना. तो बहुत नजदीक घर हमें दिखाई देते हैं, इमारतें बहुत हमें नजदीक दिखाई देता है. यानी कि इस इमेज में
हमें क्या दिखाई देता है और कौन सी इमेज है और किस तरीके का ह्यूमन सेटलमेंट है, तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ दूसरी फिगर की ओर चलते हैं, फिगर नंबर 7.1 बी। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे ये जो यहाँ पे इस तरीके का क्या दिखाई देता है, ह्यूमन सेटलमेंट दिखाई देता है। नाउ यहाँ पे ये जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो डिस्पर्स्ड दिखाई देता है, स्कैटर्ड दिखाई देता है, सेपरेटेड दिखाई देता है। यानी कि ये जो इमेज है, इस इमेज में हमें किस तरीके का ह्यूमन सेटलमेंट दिखाई दे रहा है, स्कैटर्ड वन, ओके, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ एक लाइन में ये सेटलमेंट हमें दिखाई दे रहा है। जब ये लाइन में होता है, किसी रोड के साइड में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर सेटलमेंट। यानी कि इस इमेज में हमें डिस्पर्स्ड सेटलमेंट एज वेल एज लीनियर सेटलमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ये अभी? नाउ वी विल ट्राई टू find out the answers of the questions. Now the first question is identify the type of settlements. Just now I have told you, okay, the first image shows the nucleated settlement and second image shows, that is 7.1b, shows the linear as well as dispersed settlement. Now which one is the nucleated settlement and why? So the first image shows the nucleated settlement. Why? Just now I have told you the reason behind that, because here we can see in this picture the houses are very close to each other, clustered group of houses we can see here, and because of that इसका reason है कि ये nucleated settlement है, that is figure number 7.1a. Now which one is the dispersed settlement? What could be the reason behind it? Now here second picture, that is 7.1b, shows the dispersed settlement. And what could be the reason behind that, student? So here we can see the dense forest is there, okay, and because of that here houses are very dispersed one, scattered one, and sometimes we see the houses are in line, so it is a linear settlement. Now can you guess in which regions are these settlements located in India? Now see students, so here which one is the nucleated settlement and why? Just now I have told you the reason behind that. Here why it is nucleated one, in the first figure, that is 7.1a, we can see the settlement is closely situated together. Reason behind that, availability of water as well as fertile land where we can grow the crops, okay student, and because of that here we can see the nucleated settlement. Now which one is the dispersed? Just now I have told you, because of rugged uneven topography, because of unsuitable physical features are there, and because of that here we can see the dispersed settlement. Okay student, have you understood? Now the last question, that is can you guess in which regions are these settlements located in India? So student, the first figure is 7.1a, it may be located or situated in the northern part of India. It may be the Ganga plains, okay students, and we know that the area alongside the Ganga plains we see it is very densely populated as well as urbanized one. Okay students, 7.1b picture shows that dispersed human settlement. It may be a hilly region, because of hilly region, because of mountainous region we see dispersed population. Okay student, have you understood? Very good. Students, if you liked whatever I have taught till now, then do not forget to subscribe if you are new on my channel and share it to your friends. Okay students, don't forget to like it also. Now see student, the next part we are going to understand here. Okay, so here we are going to have some information with the help of map. First I will make you understand this map and then I will explain this. Okay students, to understand the human settlement in India, we need to understand the physiographical features of India. Students, already we have studied in third chapter the physiography of India. Okay, if you quite aware about the features of physiography of India, then it is going to be very easy to understand, student. So once you know the topography of India, once you know the physiography of India, then definitely you will understand the human settlement, because the physical features are very important for the human settlements. Okay, so see student, here northern part completely we know that this is the mountainous region. Okay, Himalayan range we say. Okay, and high mountains we can see. Here this area is completely snow capped area. This is the snow capped area. Okay,
and here hilly area, mountainous area, this all are mountains we see here. Okay students, so here because of the hilly region, because of the mountainous region, definitely there will not be nucleated settlement, there will be dispersed settlement. Okay student, now see student, these are called as Ganga plains. This area is of Ganga plains. Okay students, now see, this area is called as the plains of Ganga. Okay, plains of Ganga. This area is of the Punjab and the 5 rivers in Punjab. So this land is very fertile one, plain one, and this area is called as the Ganga plains. Okay, Gangetic plains, we call it as the Gangetic plains. See here, this is the Indo-Gangetic plains, and because of that here we see the very fertile land, one of the most fertile land in India, and because of that here we see the human settlement. Okay, the most of the human settlement we see in the northern part where the Ganga plains are there. Okay, now here this is the part of Punjab and Haryana. Okay, and Punjab and Haryana also have the fertile land because of the 5 rivers in Punjab. We have fertile land here, and Punjab plains are there. Okay, and because of that human settlement is more here. Now student, so this area is of Great Indian Desert, that is the Thar Desert. Okay, and here because of lack of water, because of less rainfall, here we have desert, that is Thar Desert, and we don't have population there, so we do not see here human settlement. Okay, now this part is the central part of India. Okay, Madhya Pradesh and all. So here some of the plain regions are there, mountains are also there, as well as plains are there. So for example, here Vindhya range is there, Vindhya range. Okay, so here we have the Vindhya plains. Okay, Satpura range is there. Okay, so here nearby this we have the Vindhya plains. Okay student, the Vindhya plains, here the human settlement we see. Okay, nucleated human settlement we can see. And this part, this is the Deccan plateau. Okay student, and this is the Deccan plateau, but this Deccan plateau is westward side of the Western Ghats, westward side of the Western Ghats, and because of the westward side of the Western Ghats, here rain falls very less rain falls here, and because of that somewhat what rain shadow area we see here, and because of that here we have less human settlement. Okay, and on this side we have, on this side of the Western Ghats we have much rainfall. Okay, on the westward side of the Western Ghats, and because of that on the coastal area, on the coastal area of, this is the coastal area, so here we have the human settlements. Okay, as I have told you already, harbors are the centers where human settlements we found. Okay, so here also harbors are there, this is also coastal area, so there also we see the human settlements. Okay student, so once you understand this physiography, definitely you will understand the human settlement in India. Now see student, here अब देखिए कि geographical explanation in India we can see a variety of settlement patterns given the variety of climatic factors, availability of water, slope of the land, and level of development. So whatever I have explained all is given here. So what I have told you, availability of water, wherever the water is available, for example here because of the Ganga river water is available, so human settlement is there. So this is one example. Slope of land, so slope of land is very important boys. So here what we see, because of here this is the mountainous region, so steep, what we see, the steepness of the mountains is there, and because of that human settlement is not there, most human settlement is not there. वहां पे हमें ज्यादा human settlement दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो mountains है, mountains का steepness है, उसकी वजह से यहाँ पे हमें dispersed human settlement दिखाई देता है. ठीक है, और as well as the level of development, जहां जहां डेवलपमेंट हमें दिखाई देती है वहां वहां ह्यूमन सेटलमेंट ज्यादा होता है, अर्बनाइजेशन ज्यादा होता है, पॉपुलेशन ज्यादा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन अंडरस्टैंड वेरेवर वाटर इज अवेलेबल, then slope of land. How is the slope of land? If it is a gentle one, for example here the slope is gentle one, sometimes in between we can see the mountains,
For example, Vindhya mountain is there, Satpura range is there. Okay, here hills are there, Bundelkhand plateau is there. Okay, so wherever we see the gentle slope, there we see the population. Wherever we see the steepness of the mountains, hills, there we do not see that what settlement. Now one more important thing, that is level of development. Wherever development जहां जहां होता है, विकास जहां जहां होता है, वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट होता है. जैसे कि मैंने कहा कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, फिर एक कोस्टल एरिया है, ऑल दिस ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, वेयर वी सी द development, human development, financial development and all. So here by the side of coastal area, I have told you development होता है, बहुत ज्यादा development है. Then पंजाब यहाँ okay, तो here also development है, तो यहाँ पे भी हमें बहुत ज्यादा क्या दिखाई देता है. In the southern part, Kerala and all, here also we see the level of development is more. The level of development of the southern part of India is more than the northern part of India. Okay, student. So here level of development is very important. Now, so see what nucleated settlements are found throughout the plateau region of Narmada Valley, paddy lands in Bihar, UP, Vindhya Plateau and several other cultivated parts of India. तो कहाँ कहाँ हमें न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट दिखाई देते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. जैसे कि नर्मदा वैली. वेयर इज नर्मदा वैली? So where is Narmada Valley? So here this is the Narmada Valley. So this is the part of Narmada River. Okay, and from that the plateau starts. So here we have the nucleated settlement because of it is a plain area. Okay, as well as paddy lands in Bihar. Where do we have paddy lands in Bihar? Bihar is here. Okay, Bihar is here, and this area is alongside of the river, that is Ganga, and because of that here water supply is more, and because of that here paddy areas we see. What do you mean by paddy area? Wherever we have the cultivation of rice. Okay, that is called as paddy area. The cultivation of rice require more and more water, so this is the paddy area. Understood? As well as see UP. So this is UP. Okay, and here also we can see the Gangetic plains and the Vindhya Plateau. So where is Vindhya Plateau? So here is the Vindhya Plateau. Understood? So these are some of the areas where we see the nucleated settlement. Okay, students, have you understood this much? Very good. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पढ़ा है कि न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है. नाउ हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन हो सकता है और ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, आदिवास हो सकता है. तो ये मैप जो है क्लियरली हमें दिखाता है कि डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन कहाँ पे है, सेटलमेंट कहाँ पे है. सी wherever we see this straight lines, wherever this shows that dispersed population. For example, this part of Rajasthan, this is the Madhya Pradesh. Okay, and this part of this part, and this is the leeward side of the Western Ghat where we have rain shadow area. Here we have the dispersed area. This complete Jammu and Kashmir, Uttarakhand, all the mountainous area. Here we have what? Dispersed population or human settlement. This Arunachal Pradesh and Assam, here also we have dispersed settlement. Okay, student. If so, once you understand this map, easily you will able to answer the questions. On the other hand, dispersed settlements are found in tribal parts of covering central part of India. Central part of India. So this is the central part of India. Okay, and southern Rajasthan. So this is the southern Rajasthan. Just now I have shown you. Then Himalayan slopes. So wherever the Himalayan slopes are there, there we see the dispersed human settlement. Okay, as well as land with dissected and uneven topography. Wherever see that land is uneven, there we can see the human settlements. Okay, students, have understood the dispersed settlement in India? So here you can see completely Jammu and Kashmir is there. Okay, some of the part of Uttarakhand is there. Here Assam and Arunachal Pradesh is there. Here some of other parts, southern part of Rajasthan, and then central part, most probably the part of Madhya Pradesh, and then the leeward side of the Western Ghats. Okay, so all these area here we see the what? Dispersed settlements. Okay, now next what we are going to understand here. See student, in short I would like to tell you, let's recall some amenities and facilities are given here. Chart is given here students, a chart is given here, a chart of the amenities, a chart of
amenities is given here. We have to take a mark. Okay, the things, amenities available in village, otherwise in city. Okay, so let's try here. I have done already for you. See now, petrol pump is available in villages as well as cities also. Theater is available most probably in rural areas. Now weekly market most probably available in the village, and it will depend on the city also. Sometimes in cities also we can see the weekly market also. Now primary health center, student, most probably primary centers or medical centers we found in cities as well as in villages somewhere we can see. Now police outpost, in the both the regions we see the police outpost. Now art gallery, most probably it is not available in rural areas but in cities. Gram panchayat, definitely gram panchayat is available in the rural areas, villages. Agricultural produce market committees, here most probably it is available in the villages, and it will depend on the city. Particular in particular city, there we can find such kind of markets also, committees also. Okay, now see primary schools in the both villages as well as cities we see. Senior schools most probably we find in what, cities. The primary schools are in the villages most of the time. Okay, and most of the time the senior schools are in what, cities. Then colleges, yes, definitely the colleges will be in cities only. Okay, so shops, so both the places have the shops. Now multi-speciality hospital, definitely in rural area we lack behind in the hospitals. Okay, primary centers also sometimes we do not have. Okay, so multi-speciality hospital we see in cities only. Then metro station, yes, definitely in the metropolitan cities, here Nagpur, Mumbai, Pune, Delhi. Then bus stations, yes, definitely in the both the places. At the both the places we see the bus stations. And university, yes, definitely in cities we see the what, universities. Okay students, have you understood this much? वेरी गुड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली ये लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले और आपके फ्रेंड को शेयर करना ना भूले. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि द ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑफ ब्राजील. Okay student, have you understood this much? Very good. So if you are new on my channel, do not forget to subscribe, like and share it to your friends. Thank you. Bye. Take care. Respect your teachers and parents, and don't trouble your parents. Thank you. Bye. Take care.